Good morning, dear students. This is Sudhir Shukla. Hope you are well in this pandemic. So, let's start our discussion for the topic Introduction to Geostationary Satellite. Introduction to Geostationary Satellite. Dear students, see, I have discussed the topic orbit. There we have also discussed the types of orbit, means the classification of orbit that is based on the shape and altitude. Altitude means position. So based on the position, we have classified the orbit into three parts: LEO, low Earth orbit; MEO, medium Earth orbit; and the final one, GEO, geostationary orbit. Dear students, I have also told you in that discussion, I hope you remember my words, that the satellite which are placed in respective orbit are known as satellite related with that orbit's name. Like as if the satellite is placed in low Earth orbit, then we will nomenclature, or that satellite is nomenclaturized as LEO satellite. If the satellite is placed in MEO orbit, medium Earth orbit, it can be nomenclaturized as MEO satellite. And if the satellite is placed in geostationary orbit, the satellite will be termed as geostationary satellite. So by this concept, I hope you will never confuse while going through in any of the book these names. So let's start for this geostationary satellite. So satellite to whom we will say this is geostationary satellite, listen carefully. A satellite that appears to be at a fixed position in the sky. Fixed position in the sky to an observer on Earth is called geostationary satellite. I am repeating again. A satellite that appears to be at a fixed position in the sky to an observer on Earth is called geostationary satellite. जब अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर हो और उस ऑब्जर्वर को जो सैटेलाइट विजिबल हो, that should be fixed in the position, वो उसको फिक्स लगे, स्टेशनरी लगे, then we will say this is geostationary satellite. So there are two conditions associated with the geostationary satellite, in which the first point is orbital speed of geostationary satellite is 3.1 kmph. Let me write this. Orbital speed of a geostationary satellite is what? 3.1 kmph. Means these are the points associated with the geostationary satellite. What it is? कि जो orbital speed है geostationary satellite की, that is 3.1 kmph, kilometer per second. Means in 1 second that satellite covers approximately 3.1 kilometer. Think about it, the speed of it. These all are our imagination. While if you will go in this field, there you come to visualize all the things which I am telling you. So this is the first
condition. Second one is, if I'm talking about the second, so height of geostationary satellite above the Earth's surface, that is approximately 36,000 kilometers. That means height of geostationary satellite above the Earth's surface, above the Earth's surface is approximately 36,000 kilometers. Simply I can write in the bracket approx. Means if we are going for the orbital speed of geostationary satellite, that comes to be 3.1 kmph. And if we are going for the height of geostationary satellite, that is approximately 36,000 kilometers. So dear students, these are the 2 points associated with geostationary satellite. So for more clearance, let me draw a diagram for this geostationary satellite, because we have to know that how these values have been used, चाहे वो ऑर्बिटल स्पीड हो या वो हाइट की हम बात करें, उन वैल्यूज को हम देखेंगे. तो फॉर दैट लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम. This is what about the earth. I suppose here to be the center. So this is the half part, and let me draw the orbit for it. This is north, this is east, this is south, and this is west. I hope you know this is what the spinning of this satellite. If here there is a satellite, the spinning of this satellite is from west to east. We all know जो अर्थ का रोटेशन है, this is what equatorial orbit. Equatorial orbit. Dear students, जो अर्थ का रोटेशन होता है, that is from west to east, and it takes 24 hours. Generally it takes 23, 56, 4, but we used to write 24 hours for our easy calculation. तो ये जो स्पिनिंग है अर्थ के रोटेशन का, डेट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और सैटेलाइट भी उसी को फॉलो करता है, और सैटेलाइट उसको फॉलो कर रहा है. डेट्स वाई वी से ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी से कि सैटेलाइट इज स्टेशनरी टू अ ऑब्जर्वर हु इज ऑन अर्थ. और अर्थ सरफेस से लिया हमने इस डिस्टेंस को, डेट मीन्स कि सी लेवल से जनरली हम ये मेजर करते हैं. तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट देयर कि सी लेवल पे है, जनरली हमने अर्थ सरफेस उसको मेंशन कर दिया. सो we have to calculate these two values. For that we all know the formula. We know that speed is equals to distance upon time. We all know speed is equals to distance upon time. And if I am taking this speed as v naught, that means speed of satellite is taken as v naught. Hence we can write v naught is equals to speed is equals to distance upon time. So we can write v naught is equals to 2 pi capital R plus H upon T. Simply I can write. How? Let me draw one more diagram. Let me draw the diagram for this. Let's suppose this is an earth. From the center, the radius of which is taken as capital R. Capital R हमने ले लिया. और ये जो ऑर्बिट है,
जो सैटेलाइट ऑर्बिटिंग कर रहा है, दिस हाइट इज सपोज टू बी h. गॉट इट? हमने उसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर दिया. मीन्स दिस इज द रेडियस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर, और ये स्मॉल h ले लिया हमने हाइट फ्रॉम द सरफेस टू दैट ऑर्बिट. मतलब जियो स्टेशनरी, अगर ये सैटेलाइट यहाँ पे है रोटेशन कर रहा है, या ये सैटेलाइट यहाँ कहीं इस पोजीशन पे है रोटेशन कर रहा है, तो इस पॉइंट पे हम उस डिस्टेंस को h ले लेते हैं. तो सेंटर से टोटल डिस्टेंस हो गया r प्लस स्मॉल h. तो अगर हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डेट मीन्स कि जो डिस्टेंस है that will be the circumference of that orbit. And what is the circumference of the orbit? 2 pi r. जनरली अगर हम सर्कुलर मोशन कंसिडर करके इस चीज को समझे, फॉर दैट टू मेक इट इजी, तो सर्कमफ्रेंस विल बी गिवन बाय 2 pi r. तो अगर हम सेंटर से इस पूरे डिस्टेंस को देखें तो डिस्टेंस विल बी r प्लस h. मीन्स ये जो रेडियस हो जाएगा डेट विल बी कैपिटल R प्लस स्मॉल h. तो ये हो गया सर्कमफ्रेंस उस ऑर्बिट को कंसिडर करते हुए जिसको हमने यहाँ पे डिस्टेंस कंसिडर किया है. तो स्पीड दैट इज v नॉट इक्वल्स टू 2 pi कैपिटल R प्लस h अपॉन t. सो आई एम जस्ट you need not to forget that orbital speed I am considering to be v naught. So also we know that also we can write also the orbital speed, that is v naught. This v naught is also given as, you have all idea about this formula, gm upon r plus h. This I am considering the equation number 1, and this I am considering the equation number 1. This to be 2 and that one is 1. We all know about this orbital speed, कि वो orbital speed होता है v naught is equals to square root of gm upon r plus h. Got it? Now what we are going to do, we are just going to equate equation number 1 and 2. While equating 1 and 2, we have simply we can write square root of gm upon r plus h. Here equals to 2 pi capital R plus h by t. Simply I have equated equation number 1 and 2. तो जो 2 का है v नॉट दूसरे इक्वेशन का, उसको हमने यहाँ पे रख दिया, और जो अभी हमने सपोज किया था फर्स्ट इक्वेशन, उसको हमने RHS में रख दिया. सो while squaring both sides, we have, अगर हम स्क्वायर करें बोथ साइड्स, तो जनरली आई कैन राइट gm अपॉन r प्लस h is equals to 4 pi square r plus h का whole square upon t square. Simply I can write. So for solving t, अगर हम यहाँ से कैपिटल T को कैलकुलेट करना चाहें, for solving this t which is we are taking as a time period, for solving for t, simply I can write t is equals to 2 pi square root of r प्लस h का होल क्यूब अपॉन gm. How I have written this? We know g is equals to gm upon r square. We all know about this relationship. So from here, from the above equation, I am simply writing जो t हम टाइम पीरियड ले रहे हैं, जिसको अभी हमने 24 आवर्स लिखा था, उसी t की हम बात कर रहे हैं. t को हमने लिख दिया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस h का होल क्यूब अपॉन gm. सो वी ऑल नो अबाउट दिस स्मॉल g, सो दिस रिलेशनशिप वी आर अवेयर ऑफ इट. तो अब यहां से हम gm की जगह g से अगर रिप्लेस करें, gm इक्वल्स टू g इंटू आर स्क्वायर, तो सिंपली रिप्लेसिंग, तो आई कैन राइट सिंपली t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस h का होल क्यूब अपॉन gr स्क्वायर. सिंपली आई कैन राइट. और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो रिटर्न एज 2 पाई बाई g
sorry, 2 pi by r, or let me write freshly here, 2 pi by capital R and square root of r plus h का whole cube upon g. This is considered to be t. यहाँ से हम t निकाल सकते हैं. एंड t के बाद यहाँ से अगर हम स्मॉल h कैलकुलेट करना चाहें डियर स्टूडेंट्स, तो सिंपली वी कैन कैलकुलेट ऑल्सो. दिस h कैन बी रिटन एज स्मॉल g r स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर power 1 by 3 minus r. This is the calculated h. तो g की वैल्यू हम रखें, r रेडियस रखें 6400 किलोमीटर, टाइम 24 आवर रखें. इन वैल्यूज को जब हम रखेंगे तो दिस h is calculated nearly 36,000 kilometer. That is a near about 35,647 nearly approximated value, which is considered to be approximately 36,000 किलोमीटर. तो यहां से हमें ये डिस्टेंस आ जाता है. एंड व्हेन वी पुट दिस वैल्यू ऑफ दिस h इन दिस v0, यहां पे अगेन 6400 किलोमीटर h को हम कंसिडर करें, जो कैलकुलेटेड 36,000 की वैल्यू आई है, gm की वैल्यू प्लेस करें, तो वी विल गेट द ऑर्बिटल स्पीड. And while putting all these values, simply we can get the speed of the orbital speed of the satellite in geostationary orbit to be 3.1 kilometer per second. So dear students, I hope you understand all the things which I have told to you. If you have any doubt concerning this video, you can directly ask to me. So thank you students, thank you so much.